लीग 2025 के 8वें मैच में आप सभी का स्वागत है। आज की शाम दो बढ़िया टीम्स आमने सामने, टीम चैलेंजर्स बनाम टीम ब्लास्टर्स। टीम ब्लास्टर्स के कप्तान श्री गोपाल जाजू और टीम चैलेंजर्स के कप्तान राहुल झा, दोनों से निवेदन करता हूं कि टॉस के लिए आए। आज के हमारे टॉस के बॉस हमारे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर प्रसाद करकेरा, उनके साथ शैलेश छाड़वा। Requesting both the captains to please come along for the toss. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. So for match number 8 is concerned, to my right, it's the camp of team challengers. We've got the skipper Rahul Jha, is also the co-owner. To my left, it is Shri Gopal Jaju, the co-owner and captain for Team Blasters. To flip the coin, it's going to be Prasad Karkera. Who's going to be taking the call? Blasters to take the call. Heads is the call and it comes down. Heads. Jaju, a very important toss to win, the way you decided to give it a call. Bit of a confusion here. It's come down tails. Rahul, you've won the first match. Your team is off to a confident start, but you got to keep the momentum going. What's your call and why? Firstly, a bit surprised that we won the toss again. Challengers are not used to winning much tosses, but yes, I think the way the tournament is going, I think it's a no-brainer that we are going to be fielding first. Having said that, it's always a pressure tactic because they are a very batting heavy unit, and if they score anything above par, it would be difficult for us to chase. So it is not just that I would say it is an advantage to win the toss, but it is also it's like a double-edged sword that if you have a lot of runs on the board, there is also a scoreboard pressure. So we just can't take it lightly. Just because we've won the toss, we have to go out there and play the best cricket that we can play, and then take it from there. So yes, Rahul Jha, team challengers having won the toss on expected lines. They're going to be bowling first, inviting Shri Gopal Jaju to have a go first as a batting unit. 3 centuries in this tournament. 2 centurions have ended up on the losing side. It's a beautiful wicket, but 2 centuries in win. The team batting second has won both the matches. You're going to be batting first, so you need to put up at least something in the region of 180, 185 plus. Yeah, had we won the toss, we would have as well fielded first, but I think keeping that aside. So last match was an eye-opener, although it was a very close match. So we'll take forward that kind of intensity into this match and give challengers a good fight. So yes, that's it. We're going to be having the team snap, requesting the squad members to line up for the team snap. Akash. लग रहे हो एकदम सर। हार का फिर ऐसा कैसे? हाँ, वो तेरा टशन देखा हम लोग ने।
Both the squads have the team. A few players need to kneel down. One with a thumbs up. Bolo Ganapati Bappa. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Yes. चलिए चलिए राष्ट्रगान को सलामी देते हैट्स एंड कैप्स ऑफ. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. और एक खास बात है आज के अवसर पर हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम को आज 150 साल पूरे हुए. यह हम सभी के लिए एक बड़ी फक्र की बात है. 150 years have completed today as far as national गीत is concerned, the वंदे मातरम गीत. इस मैच के टॉस को जीता है राहुल झा ने यानी कि टीम चैलेंजर्स के कप्तान ने, और बिना कोई हिचकिचाहट, जैसे कि हम सभी को बिल्कुल ये विश्वास था कि जो भी टीम टॉस को जीतेगी गेंदबाजी करेगी. चैलेंजर्स ने भी टॉस जीतकर गेंदबाजी की है. बहुत ही महत्वपूर्ण मैच टीम ब्लास्टर्स के लिए. पहले मैच में आखिरी वक्त पर हाथ में आया मैच गवा दिया. दूसरी तरफ टीम चैलेंजर्स ने बड़ी शान और शौकत से अपना पहला मैच जीता, तो एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ ये टीम आगे जाएगी. दूसरी तरफ इस मैच को जीतना बहुत ही जरूरी है टीम ब्लास्टर्स के लिए. पहले मैच में भी ब्लास्टर्स ने अच्छा क्रिकेट खेला था, बट दे नीड टू गेट दोस फर्स्ट 2 points ऑन द बोर्ड टू गेट द कैंपेन गोइंग इन राइट अर्नेस्ट. यूट्यूब के सभी श्रोताओं का गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन कौशिक भाई मेहता की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से सभी यूट्यूब श्रोताओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं. आपका यही स्नेह और साथ हमेशा बना रहे. मिलते हैं ठीक 7 बजे इस मैच की पहली गेंद के साथ. थैंक यू. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
है रे? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
आकाश के बाजू में जाके बैठो. टॉस जीता चैलेंज ये ब्लास्टर्स. नहीं ब्लास्टर्स नहीं, चैलेंजर्स जीता बॉलिंग में. फिर उनको क्या हिंदी समझ में नहीं आता, आपने अनाउंस किया, उन्होंने अनाउंस किया. मैं टॉस के बाद तुरंत किया था मैंने. हाँ, फिर काय को आज कैप नहीं लगाया. मैं बहुत ऑड ऐसा फीलिंग ऑड. अभी कैप निकाल दिया. अच्छा ये लो. अच्छा लग रहा है ना ये. कैप हैक तो है ना कभी. आकाश की तरह एकदम भोले भाले लग रहे हो. जैसा है वैसा लगेगा भाई. ओपनिंग को नहीं श्रीगोपाल जाजू और जाजू गया ना. Welcome to match number 8 of Anandrathi Gsc T20 League 2025. This happens to be season number 5. The toss has been won by Team Challengers, and on expected lines they decide to bowl first. Rahul to Uchil. Playtime. Sagar was off to a very good start in the earlier match, and I'm sure that he will have gained some good confidence getting into this match. Welcome to Sharad Kelkar. Very nicely steering the ball into that big gap between first slip and short third man that goes crashing into the Cryptomania boundary. Very well played. Just a look at the control in that shot. Very nicely done. There was some room on offer. The first boundary of the evening coming quite early. The USP for Rahul Jha's bowling is those probing line and lengths. He always does bowl a teasing line and length. That's the picture perfect delivery, a very good comeback delivery. That is where he needs to bowl at all times. That is indeed a teaser of a delivery. His job is to play with the patience of the batsman, to play with his match temperament. On the other hand, Sagar Uchil is also quite a seasoned campaigner. A little here and there in his first over, that was too wide. Rahul Jha into the second major match of the season. Nicely cut away, that was begging to be hit away. Looking to hit the deck hard. Generally he's a bowler who will bowl a fuller length. Almost good length deliveries. That one was too short in length. The kind of form that Sagar is in is not going to be sparing those kind of loose deliveries. Second Cryptomania boundary.
The stocks are on the rise as far as Sagar Uchil is concerned. Start of the season, it's a good start. Let us see how he performs right through the season. But it's always such a good thing to gain your confidence early in the tournament. It's refreshing to see Shrigopal Jaju coming out to open the batting as well. You want your best batter to play as many deliveries as possible. That should be the Mool Mantra. That should be the positive outlook. You want your best batter to face most of the deliveries, as many deliveries as possible. Three centuries in the tournament. 2 centuries end up on the losing note. What a terrific innings of 142 not out from Daksh Agarwal to take his team past the winning post single-handedly. In the end, he was ably supported by Jalan, but almost a one-man show. A one-man army kind of an innings from Daksh Agarwal, 142 plus, not out. Mr. Flamboyance comes into the attack. The terrific all-rounder Kunal Bowser. Should be a good battle, Kunal versus Jaju. A spring down the leg side, a loosener delivery. A very focused man, Kunal Bowser. More often than not, he will do the job for the team as one of the key all-rounders. What a great asset to have in your team. Offering the full pace of the bat, and that is such a good run. Could have been close. In the end, you got to give it to Jaju. It was a well-judged single. Very rarely will you see Shrigopal Jaju going for those cheeky singles, especially early in the knock, early in the innings. Bit of a surprise, but he made his ground comfortably, convincingly. A bit of a nudge around the corner. Looking for the second run, which they will accomplish quite easily. That was played with soft hands, just looking to glide it into that backward of square leg area. Welcome to Ravindra Matharu. The fact of the matter remains that right through the 8 matches, we haven't seen any early movement. Nothing in the air. Whatever purchase you want to extract, put your shoulder in. Whatever movement you want, whatever purchase, you got to make it off the wicket. What a shot that one from Shrigopal Jaju. That's the potential of the man. Making use of the pace generated by Kunal Bowser. As simple as that. Just getting behind the line of the delivery, playing close to the body, nudging it round the corner at the most opportune time. That will do his confidence a world of good. A smashing Cryptomania boundary.
The finger has gone up. The finger has gone up and they've gone for the review. The referee coming into the box. दिल धड़कते रहेंगे.
So that's the big fish in the net. K. Talsaina construction wicket. Looking to just close the bat to a straight delivery that was into the wickets. That was up front to him, missing the line and gets leg before wicket. What a priced scalper to the kitty of Kunal Bowser. That's quite an interesting promotion for Darshan Vipulgala. Now this is a big opportunity. He knows a thing or two about left arm bowling, left arm seam bowling. Kunal will be bowling with his tail up. Darshan getting a good feel of the ball on his bat. Just caressing into that shot, leaning into that shot. End of a successful over. Score after 2 overs, 17 for 1. End of 2 Spectra group. Barrage machinery overs, 17 for 1. The biggest thank you to the title sponsor, Anandrathi, over 30 years of excellence, Cryptomania, Chetak Ply, Maharaja of Ki Pasand, Sejal Realty, K. Talsaina Construction, gifting partners, Me and Specs, and Hashtag Nuts. Relief partner, Zandu Fast Relief. Having won the toss and opting to bowl first and getting a wicket in the second over, a batsman like Jaju back in the pavilion. Team challengers will be wanting to do that often. Darshil into the attack. Bowling from the inorbitant. At the start of the innings, looking to go by the book. Oh, that was in there for quite some time. Through with his shot a little early. Oh, that one kept low. The bat down in the nick of time. That is channel bowling, metronomic bowling, wanting to go after the one that was pitched outside the off stump and moved just a wee bit further away. Getting back his foot. Down in time, and that is a brilliant piece of work, brilliantly done. A fantastic piece of fielding, saving 3 runs on the board. That's Praveen. So Praveen is already 3 not out. Even before the bat comes into his hands, he's already 3 not out, Praveen. End of 3 Spectra group. Barrage machinery overs, that is 18 for 1. The first K. Talsaina construction wicket down in the form of Shrigopal Jaju. The man for all seasons, the evergreen Jaju, back in the hut quite early. Welcome to NK Maheshwari. One more senior player.
के दिमानी दिमानी ना मैं बोलिए बोलिए ना सर बोलिए बोलिए मैं लिख लेता हूँ लिख लेता हूँ Praveen into the attack to start his proceedings from infinity end. Man on strike, Sagar. That was in his slot and no problems whatsoever. One bounce crashing into the Cryptomania boundary fence. Sagar exactly the kind of player who will not spare those loose deliveries. That was the rank bad delivery. That was the half volley. Was a loosener from Praveen. 22 for 1. Getting some good shape on that one in the block hole. That was supposed to go crashing into the roots of the batsman. Oh, what a delivery. A little circumspect, a little tentative. Much better from Praveen as he gets along in his spell, looking to find that early rhythm. Oh, bit of a mix up. There wasn't even 1% of an intent from Sagar to go for that run. He left his home, Dashangala. Quite an interesting start for Praveen. Spot on with the last 3 deliveries in that over. End of 4 overs, 22 for 1.
That's a big opportunity for Darshan now. Plays with a very good intent. No need to run for that one. Cryptomania boundary fence. Way to go. That's a smashing Cryptomania boundary fence. This time on the offside. Short in length and picking up the gap to such a nicety. Those two back-to-back boundaries will give that required confidence to Darshan Gala. Going for that big shot, not leaning into that one, the head in the air, and that is why no contact. End of a little expensive over from Darshil Desai. Score after 5 Spectra Group, Barrage Machinery overs, 34-1. That is a lapse in concentration. 34-1. Shot selection will always remain to be the key. No need to manufacture shots at this point in time. It's got an electric range of shots. Can you believe it? Sagar is already on his way back to the pavilion. He's lost all hopes. If he's indeed out, that could be Ketal Sanya construction wicket. That's quite an important one. Both the openers are back in the pavilion. Exactly what team challengers wanted.
Welcome to Mr. Rikab Jain, one of the co-owners of Team Blasters. 30 for 2, we are into over number 6. The naturally gifted stroke player, Uchil, is back in the pavilion. Clean ball aim. This man is on fire, Pravin Jain. 2 wickets in 2 ball, 1 more Ketal Sandhya construction wicket. The innings of Team Blasters at the moment is in shambles. The top order has been dismantled. Pravin Jain on a hat trick. He will not like to have a look at the replay, Darshan Gala. Nowhere near the ball. No intent in getting to the ball. No decisive footwork at all. In comes Ravindra Matharu. Missing out on that opportunity, Darshan Gala. He was looking quite decent at the start. Should have capitalized. Fending away that hat-trick ball confidently, Ravindra Matharu. What a spell this is turning out to be for Pravin Jain. Bowling with his tail up, having got that confidence. और एक विकेट का पतन होता हुआ. इंटेंट अच्छा था, एग्जीक्यूशन थोड़ा सा ठीक न होने की वजह से वो और एक बड़ा विकेट. केतल सान्या कंसेशन विकेट. गेंद को नीचे नहीं रख पाए, वो शॉट बनता था. Either you should have grounded that shot or played it into the gap. या तो फिर वो अपर कट की जरूरत थी. गलती कर गए और पेविलियन में वापस रविंद्र मथारू. उनके स्थान पर आते हुए शरद केलकर. अभी तक काफी दम है टीम ब्लास्टर्स की बैटिंग लाइनअप में. वरुण साबू अभी तक बाकी है, शरद केलकर है. हालात थोड़े से नाजुक है. अब शरद ने और स्मिथ ने मिलकर इस बिखरी वो पारी को समेटना होगा.
Vikram Panchwani now comes into the attack from the in-orbitant. The man on strike is Smith Shah. Two absolutely new batters at the wicket. The ownership stakes of Team Blasters lie with Varun Sabu, Shikopal Jaju, Joy Agarwal and Mr. Rikab Jain. The ownership stakes of Team Blasters as far as challenges is concerned, Rahul Jha, Vikram Panchwani, Hemang Pandit and Agarwal, Saurabh Agarwal. Nicely played, exquisite timing on that one. A good bit of work. Off the mark with that single, that's Smith, and on strike now for the first time in this match, that's Sharad Kelkar. Quite a competent batter. Immense potential, great match temperament. What will he unfold tonight? If I'm not mistaken, Sharad played for Team Challenges last season. Tonight in this match number 8, Sharad is up against Team Challenges, representing Team Blasters. 33 runs for the loss of 4 wickets. Two good looking strokes from Smith to the first 2 deliveries that is faced. He needs to come good big time. A shot filled with intent. Off the mark, Sharad with that single. Sharad was off the blocks in a jiffy. Not easy for a big man like Sharad to go back. Well bowled, very well bowled. The perfect length. Covering his space very nicely. Good technique at the moment from Smith. He's one of the young guns, Smith. So that zone between a backward up point and extra cover is his favorite zone. End of that over from Vikram Panchwani, wherein he gave away 6 runs. End of 7 Spectra Group, Barrage Rubber Processing Machinery overs, 36 for 4. The wicket sponsor K. Talsania Construction, gifting partner Me and Specs, hashtag Nuts, relief partner Zandu Fast Relief, boundary sponsor Cryptomania, sixer sponsor Chetak Ply, title sponsor Anandrathi, over 30 years of excellence. Coming into the attack, it's Amit Shah. He's still to announce his arrival at the Gsc T20. He will be looking to give a good account of himself here tonight in this important game. Game number 2 for Team Challengers, overall match number 8. Up against Blasters playing game number 2.
That call was from Sharad quite rightly. Putting his head down. Lots of hopes are resting on the shoulders of Smith and Sharad, especially the young gun Smith Shah. He is supposed to anchor the innings. Bit of a stroke player himself. That's Sharad. Offering the full face of the bat. Ample time for Sharad to play his game, to get his eye in and then play the natural game. He can kind of build his innings tonight. That is indeed all the way Cryptomania boundary. Just what the doctor ordered for Team Blasters. Of whatever we have seen of Smith is looking damn good at the moment. Now he needs to capitalize on this start. Score after 8 overs, 43 for 4. गेंदबाजी का भार संभाले विक्रम पंचवानी. फ्लाइटेड गेंद, थोड़ी सी लूज गेंद. भाग्यशाली रहे विक्रम कि वहां पर केवल एक ही रन मिला. हालांकि उस गेंद को तो मैदान के बाहर जाना चाहिए था. So please wait. Yeah. That's a fair delivery. Good to go. Quite a few seniors have turned up. Sushil Patil, Sunil Devli, Alpesh Shah, Parag Shah, Prasad Karkera. Oh, going for a biggie, missing the line. All along the ground, driven downtown.
bit of a misfield will result in a Cryptomania boundary. Exactly what the Sharad wanted to get going. Tonight is the time wherein Sharad has got good enough time to build his innings the way he wants to structure his innings, structure his knock. Oh, this is terrific. The bottom hand coming into play. Up and over she goes. That was in the slot of Sharad Kelkar and gets the treatment that it deserved. What a shot. Cracker of a shot. चेतक प्लाय महाराजा की पसंद वाला ये छक्का 50 के उस पार. That's a japper. An absolute ripper. Getting some good bite of the surface. The game on, the match on. Battle on our hands. A very early and a firm call from Smith Shah. There was always a run in it in the form of a leg by. The score after 9 overs, 55 for 4. Welcome to Rohit Rajan, Hitul Kothari. The run rate is good enough as far as Blasters is concerned. This is the last over before the drinks interval. They just got to go by the book. They got to ensure that they do not take any untoward risk in the over before the drinks interval. The team will get together during the drinks interval and re-strategize, realign, reorient. Boys and girls, score after 9, 55 for 4. Starts with a dot ball. No referrals for a caught behind. Getting right behind the ball. That good delivery, getting the due respect from Sharad. This is the last over before the drinks interval. The team is 4 wickets down, 55 for 4 it is. Good toss to win. What's happening out there?
With that single, the score now on to 56. We are into the 10th Spectra group. Barrage machinery over. We already have seen a few Cryptomania boundaries. Chetak Ply sixer, Ketal Sanya construction wickets, 4 of them. Gifting partners, me and Specs, hashtag nuts. Relief partner, Zendu Fast Relief. The ball climbing onto Smith. Very nicely played. He's not looking to play with a dead bat. He's putting the ball into the gaps. Last ball coming up. More than content with a single. So yes, that's the drinks interval. 10 Spectra group and Barrage machinery overs are over. It is 57 runs for the loss of 4 wickets. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Back in the attack, that's Rahul Jha. It's Darshil. Oh, what a smart inside out shot. That was the half volley, and that is dispatched out of sight with disdain by Sharad Kelkar for a very confident looking Cryptomania boundary. That sped off his bat like a bullet. Well timed. लंबी इनिंग्स खेलनी होगी, उसी फिराक में नजर आते हुए शरद. जैसे वो गेंद बॉलर के बगल से निकली और रन चुरा लिया. 1 रन के साथ 63 रन बने हैं. 4 की तलसान्या कंस्ट्रक्शन विकेट्स के नुकसान पर. What a shot! That was in the air for quite some time. They collect that second run quite easily. ग्यारह ओवर्स के पश्चात 66 रन बने हैं. 4 विकेट्स के नुकसान पर अमित शाह का स्पेल बरकरार रहेगा. स्ट्राइक पर होंगे स्मिथ. बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आए स्मिथ, और एक अच्छी साझेदारी रंग लाती हुई शरद और स्मिथ के माध्यम से जिम्मेवारी को और लंबे समय तक निभाना होगा शरद और स्मिथ ने. बिल्कुल बल्लेबाज की जड़ में वो गेंद, अच्छी गेंद. अमित शाह ने अपने पहले 2 ओवर्स में 10 रन दिए हैं. सूझबूझ से गेंदबाजी करना, सुलझा हुआ क्रिकेट खेलना, ये अमित शाह के गेम का एक मजबूत पक्ष है, और इसी वजह से चैलेंजर्स जैसी बड़ी टीम में उनका समावेश है. एक अच्छी राशि वहां पर खर्च की है राहुल झा, विक्रम पंजवानी, हिमांग पंडित और जय अग्रवाल ने अमित के लिए. और अमित की भूमिका यह है कि अपनी ओवर्स को सटीक तरीके से करे. फील्ड में हमेशा ही जान की बाजी लगाते अमित. जब बल्लेबाजी करनी होती है तो मैच सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करे. ओ परफेक्ट डिलीवरी. इससे शानदार यॉर्कर क्या हो सकता है, और कितनी अच्छी तरीके से स्टीयर किया उस यॉर्कर गेंद को थर्ड मैन की दिशा में.
पहली गेंद को भी इसी तरह से खेला था स्मिथ ने अपनी इनिंग्स की, और उस गेंद को भी उसी तरह से. बहुत अच्छे लग रहे अभी तक जो भी कुछ देखने को मिला है स्मिथ से. इस लुक्ड अ ब्यूटी. A couple of bounces to the man in that longer position. Sharad is on to 22 of 19. Oh, that is a cracker of a shot. Stepping out and looking to get to the pitch of the delivery. That was a shot in length. Through with his shot. Not afraid to go all out with that shot. A terrific Chetak price 6. Maharaja of ki pasand. Cutting loose with that sixer. Making his intention clear. Looking to change gears. Promising young man, Smith. He needs to live up to the reputation of being a very promising cricketer. Lots of good talk about Smith Shah in the GSC cricketing corridors. Oh, that's a good pickup and throw. Good cricket. It's been referred into the box. Might be just a case of some insurance being taken. So let's see how it goes. Smith is looking like a 24 karat gold player tonight, and nicely being given company by Sharad Kelkar. They are looking a good formidable pair, exactly the kind of approach that was required for the welfare of the team in this kind of a tight situation. That was just the insurance, just to be extra sure. And nowadays the umpires do not want to take any chances. समझ सकते हैं क्योंकि जब वो टेक्नोलॉजी है तो फिर उसका फायदा क्यों ना उठाए. 12 स्पेक्ट्रा ग्रुप बराज मशीनरी ओवर्स के पश्चात रन संख्या 75 रन, 4 के तलसानिया कंस्ट्रक्शन विकेट्स का पतन हुआ है. अड़तालीस गेंद अभी भी शेष इस इनिंग्स में. राहुल झा की अब आजमाइश होती हुई, वापसी होती हुई बॉलिंग अटैक में. टीम चैलेंजर्स के खेमे का एक बहुत ही उम्दा नुमाइंदा राहुल झा, टीम के कोऑनर है, टीम के कप्तान भी है, बहुत ही सुलझे हुए क्रिकेटर है. राहुल झा को क्राइसिस मैन कहते हैं. उनके कोऑनर विक्रम पंजवानी द मैन फॉर ऑल सीजन्स. This man is looking so very good tonight. Exactly what the doctor ordered. Good bit of work by the man in that wideish mid-off area, saving 2 runs. The head was a little high in the air, and that is why the lack of timing. But it clears the fielder by a long way. 2 runs added. Both the batters on 22 now.
देखिए दोनों ही बल्लेबाज ने अपने 22 रन्स 19 गेंदों में मुकम्मल किए, शरद ने भी और स्मिथ ने भी। प्रोजेक्टेड स्कोर 125। पहली बार एक स्लॉक शॉट को अंजाम देने की कोशिश की, टाइमिंग थोड़ी सी हेवायर, थोड़ी सी इधर उधर। थोड़ी सी खबरदारी लेनी होगी यहां पर स्मिथ ने। स्टेप आउट होकर खेला है एक करारा शॉट, बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी को जवाबी कार्रवाई के रूप में स्टेप आउट होकर वाइडिश मिड ऑन के क्षेत्र में और एक करारा क्रिप्टोमेनिया चौका। क्रिप्टोमेनिया वेब सीरीज के करता धरता हेमांग पंडित हमारे बाउंड्री स्पॉन्सर और टीम चैलेंजर्स के को ओनर भी है हेमांग पंडित। दैट कुड हैव बीन स्टॉप्ड। वाइड गेंद, सोच यही थी कि शरद की रेंज से उस गेंद को लंबा रखे, रूम तो दिया था, शॉट भी खेलने का अंदाज जताया, वहां पर शरद ने मिस कर गए। वाइड गेंद का इशारा एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। Good bit of work, very nicely done. Very nicely done, picking up that single. The score after 13 overs, that's 84 runs for the loss of 4 wickets. Slowly but surely picking up the momentum. The current run rate is 6.46. Ideally, maybe they would have wanted something in the region of at least 7.75, not too far behind. The ideal batting partnership starting to assume proportions, the right kind of an approach, the right kind of momentum being gathered here, still somewhere left. Ideally, the think tank of Jaju and Varun will want this partnership to continue for another 3 overs at least before they can really go all out after the bowling. It's time for both these batters to play in the same vein for the next 3 overs. Now that both the batters are well set, the good deliveries will look ordinary for them, and that is where they need to collect those extra runs. राहुल झा ने अपने 2 ओवर्स में 17 रन्स दिए हैं। कुणाल भावसर की वापसी होती हुई सेकेंड स्पेल में हमेशा की तरह लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी को फिर से एक बार पेश करेंगे। स्ट्राइक पर है शरद केलकर। शॉट पिट डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, थोड़ी सी वाइड गेंद थी। अगर हल्का सा भी बल्ला लगता तो शायद जिस पेस के साथ गेंदबाजी कर रहे वो चौका मिलने के पूरे आसार थे। अच्छा शॉट, पता था शरद को कि ये गेंद ब्लॉक होल में आ सकती है, बिल्कुल तैयार थे उस तरह की गेंद के लिए। पहले मन को पढ़ लिया था कुणाल भावसर के। हर गेंद बल्लेबाज की तरफ एंगल होगी, या तो यॉर्कर होगी या तो शॉर्ट पिच डिलीवरी होगी। ज्यादातर अपने सेकेंड स्पेल में इसी तरह की गेंदबाजी को प्रस्तुत करते हैं। गति में परिवर्तन किया था, 1 बाउंस कुणाल भावसर के हाथों में उस गेंद को वापस खेला। थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में होने के बावजूद
जवाबी कार्रवाई में छक्का मिला है, चेतक प्लाई छक्का, महाराजा की पसंद। Kunal Bhavsar getting a taste of his own medicine. ऑकवर्ड पोजीशन में होने के बावजूद छक्का लगाया स्मिथ ने। बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आए स्मिथ। जिस तरह की इनिंग्स की दरकार थी एक अच्छे बल्लेबाज की तरफ से, उसी तरह की इनिंग्स को अंजाम देते हुए जस्ट व्हाट ही डॉक्टर ऑर्डर, बिल्कुल मैच सिचुएशन के अनुसार अपनी इनिंग्स को सजाते हुए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। अब थोड़ा सा खुलकर खेलते हुए, अपनी नेचुरल गेम को खेलते हुए शरद। टाइमिंग काफी बढ़िया, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद अभिषेक, लॉन्ग ऑफ पर 1 रन की उपलब्धि हो गई। ओवर की समाप्ति 14 स्पेक्ट्रा ग्रुप बराज मशीनरी ओवर्स के बाद 93 रन 4 विकेट्स के नुकसान पर। प्रोजेक्टेड स्कोर अब 133। अगर 145 के ऊपर अगर ये टीम रन्स बना लेती है तो मेरे ख्याल से जाजू, वरुण, साबू सभी लोग काफी समाधानी होंगे। एक फाइटिंग पार्टनरशिप को पेश करते हुए शरद और स्मिथ एक दूसरे को बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हुए, लगातार आपस में बातचीत करते हुए, एक दूसरे का मनोधैर्य बढ़ाते हुए फाइटिंग पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप के चलते वापसी के दरवाजे खुल चुके हैं टीम ब्लास्टर्स के लिए। हालांकि काफी क्रिकेट खेलना अभी भी शेष है। वापसी की महक लहराती हुई जीएससी के मैदान पर टीम ब्लास्टर्स के लिए। बिल्कुल आगे की तरफ गेंद को परोसा था, सीधे सीधा मैदान के बाहर उस गेंद को पहुंचाया। यह मजबूत पक्ष शरद का, सेट होने के बाद तो इस तरह की गेंदों को नहीं बख्शेंगे शरद। अब आखिर में कुछ जान में जान आई है रिकब जैन के। हौसला अफजाई करने के लिए यहां पर कोन सभी मौजूद है दोनों ही टीम्स के। बुलंद हौसलों के साथ शरद केलकर और स्मिथ शाह अपनी टीम को एक वापसी के मार्ग पर ले आते हुए दे आर बैक ऑन ट्रैक। फिर से एक बार करारा शॉट और वही जवाब, लाजवाब जवाब और एक चेतक प्लाई छक्का। गति में परिवर्तन किया था, बहुत ही जल्दी उस धीमी गति को पढ़ लिया, रुककर शॉट को खेला। 100 रन बन चुके हैं, 105 100 के उस पार। जो प्रोजेक्टेड स्कोर 115 का था वो प्रोजेक्टेड स्कोर अब 147 का बन चुका है। देखते देखते ये वापसी की है यहां पर टीम ब्लास्टर्स ने। खुलकर खेलते हुए शरद, अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए क्या मोमेंटम गैदर किया है, सटीक तरीके से अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया है। Oh, bit of a misfield and one extra run being collected. Sharad moves on to 43 for the first time in the last 2 seasons. Sharad has scored 40 plus. This is the Sharad that we all know. Long tennis kind of a shot. क्या जबरदस्त शॉट है ये वाला शॉट, बहुत ही मुश्किल शॉट होता है। चेतक प्लाई छक्का, महाराजा आपकी पसंद। इस तरह के शॉट को अंजाम देने के लिए यू नीड टू हैव कोर स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग शोल्डर, स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स।
ये सभी का मिलनसार शरद केलकर में होता हुआ एकाग्रता, ताकत और आत्मविश्वास के त्रिवेणी संगम को पार करते हुए शरद केलकर और विस्फोटक अंदाज में इस इनिंग्स को अब सजाते हुए 49 पर है शरद। अपनी लाइन को चेंज किया, राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया राहुल ने। 15वें ओवर की एक गेंद अभी भी शेष है। पचास रन बन चुके हैं शरद केलकर के। The monkey is off his back. What a capable player, what a competent player, what a passionate player. He comes good. This is the first century being registered by Sharad Kelkar at the Goregaon Sports Club, and now that he's pulled that first half century, we hope to see quite a few more from his bat. But what a fighting partnership. Forget those 50 runs. Each and every run in the partnership has been absolutely invaluable. The top order of Team Blasters was in shambles. It was dismantled by the wonderful bowling attack of Team Challengers. But courtesy this wonderful and fighting partnership between Smith and Sharad, the team happens to be right back in the match. The partnership is worth 84 mind-boggling runs of only 54 balls. What a partnership. Absolutely amazing. 35 मिनटों में 5 ओवर्स करना है सर, ये तो बड़ी आसानी से होगा। 7 मिनट दिए सर आपने एक ओवर करने के लिए। प्रवीण की वापसी मिस कर गए शरद। नो का इशारा, 2 रन्स मिलेंगे और एक फ्री हिट भी। जिस तरह के फॉर्म में थे शरद, वो गेंद विकेट प्लॉट में जानी चाहिए थी। चले कोई नहीं, 2 रन्स मिले। गेंद चीरती हुई निकली। विक्रम पंजवानी के इर्द और गिर्द से आसानी से गेंद निकलती नहीं है। That was a scorching Cryptomania boundary from Smith. उंगली उठी है, कोई दिक्कत नहीं। रिव्यू लिया है। जिस तरह से उंगली तुरंत ही उठी राजू पवार सर की, मामला पेचीदा है स्मिथ के लिए। मामला पेचीदा है, जिस तरह से तुरंत ही उंगली उठी थी। कभी कभी गलती हो जाती है कुलदीप सर, पता नहीं, देखते क्या है। रेफरल लिया है। The man under the radar, that's Smith Shah, one of the architects of this fighting partnership. The way he's been playing tonight, he's looked like a gem. Lots of promise. If the decision does not go his way, that would be so unfortunate. Oh, they've got still Jigar Shah. सभी को मंत्र मुग्ध किया था जिगर ने अपनी उस इनिंग से।
इसके पहले वाले मैच में आखिरी गेंद पर टीम ब्लास्टर्स को शिकस्त मिली और उस तरह की हार या जीत से मेरे ख्याल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आखिरी गेंद पर मैच हारना यानी कि आपने पूरी तरह से आपके कौशल्य का परिचय दिया। क्रिकेट गेम में एक ही टीम को तो हारना है। विपरीत परिस्थिति को मात दिए थोड़ी सी अनुकूल स्थिति अब उभर कर आती हुई टीम ब्लास्टर्स के लिए। सुलझा हुआ क्रिकेट खेला है सूझबूझ के साथ। जिस तरह से वो उंगली उठी थी राजू पवार सर की तुरंत ही वहीं पर इस डिसीजन का नतीजा बया हो चुका था। अगर डाउटफुल होता तो इतना जल्द राजू पवार सर अपनी उंगली न उठाते, क्योंकि उनके जहन में किसी भी तरह से कोई डाउट नहीं था। उस वजह से आत्मविश्वास के साथ उनकी उंगली बहुत ही जल्द ऊपर आई। That was the biggest giveaway. But what a good knock from the blade of Smith. What a good knock. बैटिंग टीम के दोनों ही रिव्यूज खत्म हो चुके हैं। वरुण साबू, नो मोर रिव्यूज नाउ। वेरी गुड नॉक. Not in terms of runs, but in terms of attitude, approach, and the way he was middling the ball. This is the best of Smith Shah that I have seen over the last 2 seasons. This is the best of Smith Shah. Forget the number of runs. He was looking a class act. That's more important. How good you look at the wicket in a testing situation. In comes Jigar. जिगर का नाम यूं तो जिगरा होना चाहिए। क्या मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, टीम मैन है। Any captain would almost give his finger away for a man like Jigar to be in his team. Varun, don't worry, he will not ask for your finger. अब शरद का अप्रोच यहां पर काफी दिलचस्प होगा। देखना है कि अब स्मिथ की अनुपस्थिति में किस तरह से इनिंग्स को खेलते हैं। जिस तरह के फॉर्म में अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, टीम की सिचुएशन अभी यही मांग रही है। शरद ने पहली हाफ सेंचुरी रजिस्टर की है। Now that he's got that 50, I'm sure that Sharad will be greedy for more runs. The monkey's off his back. He wanted that half century to his name. He's got it. Sharad will be looking to carry this good batting form into his bowling as well. You excel in one department, the chances are that you'll excel in the other department as well. Oh, what a peach of a delivery. That's a peach of a delivery. The perfect Yorker from Praveen Jain. Praveen Jain has been more than a handful. Quite an intelligent bowler. He knows his limitations and he accordingly bowls. He's been an absolute revelation tonight. That's Praveen Jain. He's given away 12 runs. He's picked up 3 wickets. He's been the pick of the bowlers for team challenges. He's been the man to watch out for. End of 3 overs from Praveen Jain. He's given away 13. He's picked up 3 wickets. Score after 16 Spectra Group barrage machinery overs. That is 123 with half the team back in the pavilion. This is match number 8. One more time, welcome to the Anandrathi Gsc T20 League Season 5.
quite a good crowd has gathered. Team Challengers always come in with a good number of supporters. टीम ब्लास्टर्स के खेमे में भी काफी अच्छे सपोर्टर्स नजर आते हुए तलवारें खींची गई है. ये मैच अब बिल्कुल समांतर स्थिति में नजर आता हुआ. फिर से एक बार थोड़ा सा मोमेंटम अपने पक्ष में खींच लिया है टीम ब्लास्टर्स ने. शुरुआत में मामला बहुत ही पेचीदा था. अग्नि परीक्षा से गुजरती हुई टीम ब्लास्टर्स ने अब स्कोर बोर्ड पर एक अच्छा लक्ष्य स्थापित किया है. ओह, बहुत ही बढ़िया डिलीवरी, कोई मौका नहीं. बड़ी तेज रफ्तार से वो गेंद अंदर की तरफ आई. राइस भी हुई. दो लड़ाकू प्लेयर्स आमने सामने. यॉर्कर गेंद, 4 रन मिलेंगे. राहुल झा के बगल से वो गेंद निकली. क्रिप्टोमेनिया चौका. कुणाल की उस पेस पर केवल बल्ला लगाना होता है, प्लेसमेंट को पिक करना होता है. क्या खूब खेला है उस गेंद को. गेंद खराब नहीं थी, केवल थोड़ा सा रूम दे गए थे. बिल्कुल प्रतीक्षा में थे जिगर. उन्हें पता था कि वो गेंद फुल लेंथ डिलीवरी होगी. तैयार थे जिगर उस तरह की गेंद को नेगेट करने के लिए. और एक क्रिप्टोमेनिया चौका. थोड़ी सी मिस जजमेंट. पता होना चाहिए कि वो गेंद वहां पर आपके बाई ओर ही जाएगी, हमेशा लेफ्ट साइड पर ही जाएगी. 131 रन से बन चुके हैं. थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया और बहुत ही शानदार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव को अंजाम दिया. अच्छी फील्डिंग अमित शाह की, बहुत ही अच्छी फील्डिंग. कितनी अच्छी टाइमिंग थी उस शॉट में. कुणाल बाउसर एंड जिगर एक्सचेंजिंग अ फ्यू वर्ड्स. दोनों ने काफी क्रिकेट साथ में खेला, एक दूसरे की फितरत को भली भांति जानते हैं. एक 134 रन बन चुके हैं. 17वें ओवर की एक गेंद शेष है कुल मिला की, और 19 गेंद आनी बाकी है टीम ब्लास्टर्स के इस इनिंग्स में. 134 रन बने हैं. बल्ला हाथ में घूमा है. नो मैंस लैंड में वो गेंद गिरी. एक ही रन से समाधान प्राप्त किया, पहले ना कह दिया. 17 ओवर्स के बाद 135 रन आधी टीम पेविलियन में वापस आ चुकी है. इस तरह की स्थिति में से उबर कर अगर ये टीम 150 के ऊपर जाती है, 160 के घर में जाती है, तो एक वरदान साबित हो सकता है टीम ब्लास्टर्स के लिए. The bowling brigade of team Blasters will have a good number of runs to be defended. One point in time, 125-130 was looking impossible, was looking improbable. But that fighting partnership from Smith and Sharad Kelkar have turned the tables on, and now they will be looking for at least 160. They will not settle for anything less than 160 now in this kind of a scenario. The tables have turned. This should be a very good cricket match, and Team Blasters should be wanting to add as many as they can towards the end of this innings, because they are up against a team like Challengers, which can bat very deep. It's a very flamboyant side. It's a bunch of great cricketers.
Team challengers will back themselves to even chase down something in the region of 175. But should be a good match. Praveen Jain into his last over. He's been the standout bowler. Bowling to Sharad in ominous touch in good form. Showtime. Sharad is a strong man and he can pack a punch. So when he times the ball will invariably be traveling at good speed. 136 for 5. Jigar on strike facing Praveen Jain. The balance in that shot went a little haywire. What a night this is turning out to be for Praveen Jain. He's been spectacular at the top of his game. That's Praveen Jain. He's been the miserly bowler. Very well bowled, very well bowled. Just look at the cool and calm in Praveen Jain. The wicketkeeper for Team Challengers is also a very flamboyant player. Swikar, the ace wicketkeeper batsman. A very gutsy player, Swikar. He'll have a role to play in the second half. Oh, missing out. थोड़ा सा जोर से मारने का प्रयास किया, वहीं पर वो टाइमिंग थोड़ी सी हिली. Maybe he's running out of fuel. He's got one good spell to come, Sharad. Hot and humid conditions, dry conditions. There's not an iota of wind, no wind at all, no breeze at all. Clean bolt. The stump goes for a walk in the park. That's the fourth wicket that Jain has picked up straight away with that kind of spell. He will be in contention to pick up the Player of the Match award. Back in the pavilion is Jigar with the big Jigira. In comes Varun Sabu. Ketal Sanya concession wicket, quite an important one. As he came back to the pavilion, Kunal Bowser gave Jigar a piece of one delivery left. One final chance for Praveen Jain to pick up a 5-4. पंजा दर्ज करने के लिए आखिरी गेंद अभी भी बाकी है. स्पेल की आखिरी गेंद. प्रवीण जैन ने 3.5 ओवर्स में 16 रन्स दिए, 4 बल्लेबाजों को पेविलियन चलता किया. उनके स्पेल में एक रनआउट का विकेट भी प्राप्त हुआ है. क्या बढ़िया शाम रही है प्रवीण जैन के लिए. वापसी तो कर ली है टीम ब्लास्टर्स ने. यहां से आगे जो भी कुछ हो, वापसी तो बड़े पैमाने पे की है. क्या ये स्कोर टीम चैलेंजर्स के लिए इनफ होगा, ये बड़ा प्रश्न है. गेंदबाजी ब्रिगेड ने बिल्कुल अपनी रंगत में आकर गेंदबाजी करनी होगी, उजागर होकर गेंदबाजी करनी होगी. अभी तक 3 सेंचुरीज इस टूर्नामेंट में देखने को मिले हैं. दून सोमैया, किंगशु कोराय और दक्ष.
18 ओवर की समाप्ति पे 139 रन, 12 गेंद बाकी है, 12 गेंद बाकी है। बहुत ही बढ़िया स्पेल मुकम्मल हुआ प्रवीण जैन के लिए। 17 रन से दिए केवल और 4 बल्लेबाजों को चलता किया। बहुत ही शानदार स्पेल, सभी लोग सराहना करेंगे। Praveen Jain has been the saving grace for team challenges tonight with that incredible spell, tying the noose around the batting lineup of Team Blasters to a great extent. Kunal Bowser is going to be the new man in Varun Sabu is going to be on strike. What do they have in mind? Sharad Kilkar and Varun Sabu, how many they intend to put up in the next 12 deliveries? At least 20 plus is what they will be wanting to add. Varun Sabu, fresh at the wicket, new at the wicket. What's going to be the first delivery to Varun Sabu? A Yorker or a short pitch delivery? दोनों में से एक। गति में परिवर्तन किया, फुल लेंथ को पेश किया। उस एक रन के साथ रन संख्या 140 रनों पर। स्ट्राइक पर शरद ने 36 गेंदों में 57 रन से जोड़े हैं। बिल्कुल बॉटम में वो गेंद का संपर्क हुआ, एंड दैट इज व्हाई द हॉलो साउंड। One 41. Well left. One extra run takes the score to 142. 9 balls left. We are into the 19th Spectra Group Barrage Machinery over. Dot ball. Oh, what a fine grab that is. What a stunning catch. That's from Rahul Jha. The umpire wants to confirm the height of the delivery. Looks a little dicey for me, Kuldeep sir. थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, पता नहीं, देखते हैं। यहां पर अंपायर ने ये चेक करना होगा कि जब वो गेंद संपर्क में आई बल्लेबाज के बल्ले से, तब वो डीप हो रही थी या फिर वो सीधी निकल रही थी। चलिए, we leave it to the umpire. That's a fair delivery. That's been confirmed. So we'll have to be on his way back to the pavilion. That is the batsman Varun Sabu. What a fine catch by Rahul Jha. A fine catch. Well judged. He made it look easy. Mind you, that wasn't so easy. Junior Jaju comes in to replace Varun Sabu. K. Tarsanya construction wicket. Losing a bit of a momentum here in the dying stages of this innings. That is Team Blasters.
जूनियर जाजू प्लेइंग अलोंगसाइड सीनियर जाजू, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है. Father son playing in the same team, that is always some extra pressure on the young man. Ideally, you wouldn't want that, but it's happened. 7 balls left, 142 it is. आखिरी बॉल पर क्या एडवाइस है? शॉट खेलने की एडवाइस दी होगी. चौका या छक्का मारने की कोशिश कर, सिंगल मत लेना, ये एडवाइस होनी चाहिए. चलिए डॉट गेंद. स्वागत है बापू का, नरेंद्र जडेजा. बापू फील्ड छोड़ है. +45 के प्लेयर्स फिट नजर आते हुए अभी से ही अपनी फिटनेस पे तो लगातार पूरा साल काम किया ही है. ऑफ सीजन में शायद मेरे ख्याल में सभी ने 3 महीनों का ब्रेक लिया लेगा, ज्यादा से ज्यादा 4. वॉलीबॉल पर ध्यान थोड़ा सा ज्यादा है, रिकब भाई कहते हुए. The buzz in the air is that the 45+ auctions could happen maybe in the month of December next month or in Jan. देखते हैं कौशिक भाई ने क्या सोचा है उनकी टीम ने, बट वो बात इस वक्त उड़ती उड़ती आ रही है कि शायद अगले महीने में वो ऑक्शन हो सकता है. अमित शाह अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर, टीम के लिए भी आखिरी ओवर, अभी तक बिना कोई विकेट लिए 19 रन्स दिए हैं. ठीक ठाक स्पेल, कोई खराब नहीं. अमित शाह का यह स्पेल काफी उपयोगी स्पेल है, अच्छा योगदान दिया अभी तक. केम छो भाई? मजामा? आज राखू ने. चलिए अमित शाह. बढ़िया शॉट और ये गेंद चली और चल गई. मैदान के बाहर शरद के बल्ले से निकलता हुआ और एक करारा चेतक प्लाई 6 हाफ वॉली गेंद को जवाबी कार्रवाई के रूप में उड़ा पटक दिया मैदान के बाहर. जिस तरह के फॉर्म में शरद है, इस तरह की गेंदों को नहीं बख्शेंगे. खराब गेंद थी अमित की, सही जगह तक पहुंचाया उस गेंद को. श्रीनाथ भाई सोच रहे मेरा नंबर कब आएगा. उनके बाजू में भी स्ट्रोक प्लेयर ही है विनोद डोकानी. ये वाला शॉट बहुत बढ़िया, ये वाला शॉट बहुत ही बढ़िया. इस तरह की लो फुल टॉस गेंद को मैदान के बाहर फेंकना क्रिप्टोमेनिया 6 के लिए आसान बात नहीं है, क्योंकि उनका कोर स्ट्रेंथ ही मजबूत है. वेलकम टू आदित्य गुप्ता. 154, 150 के उस पर यह टीम जा चुकी है. 150 अप. इस तरह से अगर हाफ सेंचुरीज लगाते रहे तो शरद खेलकर अपने शूटिंग स्केड्यूल को भी तोड़कर यहां पर आएंगे, छोड़कर आएंगे. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है. एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड. 3 balls left, 154 it is. भागना तो चाहते थे दो, लेकिन कोई गुंजाइश ही नहीं बनी.
चलिए 2 गेंद बाकी, 155 रन बने हैं, 2 गेंद शेष है। जाजू के पास लाइसेंस है कि अपना स्ट्रोक खेले, कम से कम 1 रन तो लेना ही है। या तो चौका छक्का लगा या तो फिर 1 रन किसी भी हालत में ले। ये एडवाइस शरद ने एडवाइस की होगी कि आप बिंदास खेलो, आपके शॉट्स खेलो, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्राइक मिले या ना मिले बड़ा शॉट प्रयास करो, और अगर मिस भी हो जाते हो तो भी रन लेना। Chole. Sharad will have to be at the non-striking end. That's the Ketal Sandha concession wicket. जूनियर जाजू शॉट तो बन रहा था, एग्जीक्यूट भी ठीक ठाक किया। पेविलियन में वापस अब प्रणव उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 155 रन बने हैं और ये अब आखिरी गेंद होगी टीम ब्लास्टर्स की इनिंग्स में। बहुत ही बढ़िया फाइट बैक कर गए, एक अच्छा लक्ष्य डिफेंड किया। यहां से आगे बढ़ते हुए चाहे कितनी भी अच्छी बैटिंग लाइनअप हो, 155 रन तय करना अपने आप में एक चुनौती होगी। अगर आपके खेमे में 11 के 11 बल्लेबाज है तभी भी ये वाला लक्ष्य थोड़ा सा चुनौती भरा होगा। 155 खड़े हो चुके स्कोरबोर्ड पर। टीम चैलेंजर्स की बैटिंग लाइनअप को अच्छा क्रिकेट खेलना होगा उस लक्ष्य को तय करने के लिए। शुड बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग सेकेंड हाफ, डू नॉट गो अवे। Oh, the end innings over the boundary. 159 it is, 160 runs to win the match. A cryptomania boundary of the last ball. The set target for team challengers, ladies and gentlemen, boys and girls, that is 160 to win. Welcome to Jasab, the corner of team challengers. 160 to win. Time for the mid-innings break. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
Welcome back. The opening pair of the left-handed Hardik and right-handed Vicky Panjwani taking first guard for Team Challengers. The target 160 to win the match. It's going to be Smith shot to be opening the bowling from the infinity end. The man on strike, that's Hardik. Lights, camera, action. Let's rock and roll. The straight delivery. Nicely defended by Hardik, offering the full face of the bat. A bit of a wild throw. It's Jigar Shah who is going to be keeping wickets in place of Sagar Uchil, who is cramping, a little unfit. Jigar has been handed over the wicket-keeping gloves, and that is why we always keep saying that he's such a multi-dimensional player. He can keep wickets for 20 overs. He can bowl those 4 overs. He can be used as a floater from anywhere from number 4 to number 7. That's the kind of player that Jigar is. In the meantime, we've got one very good badminton player with us, Gaurav Talwar. Oh, that is good aggressive fielding. The way he came charging in, the way he picked up and had a go at the striking end. That's Saransh, looks like him. Warmest welcome to Karan Paji, the co-owner of a team Gangsters, and a fine senior cricketer who's coming up the ranks, whose stocks have been on the rise, Karan Singh Walia. What a wonderful innings scripted by Smith. Now Kenny once again impressed with the ball. Time for Vikram Panjwani to come into his own. Very nicely done. Playing it late, that was the key. A man in hot chase, the ball does not have enough gas on it. Holds up. A couple collected. He's predominantly a backfoot player, Hardik Panchal.
A bit of a challenge to be bowling to a left and right hand combination. Hardik and Vikram. A good bit of work by Junior Jaju. Warm welcome to Mickey Modi, the opening batsman for Super Kings and also one of the co-owners. What a fine knock from Sharad Kelkar, playing to his potential tonight. Just what he talked ordered, providing the momentum in the company of Smith and taking his team into a reasonably decent position. Not a mountain to climb for team challengers. All the more when you look at the batting lineup on paper, so much of potential there. So much of ammunition in the arsenal there. So much of ammunition. As was expected, it's going to be Darshan Vipulgala to be bowling from the in-orbit end, left arm over the wicket. He's got a slinging action. He invariably gets the ball into the right-handed batsman. The key for him tonight will be to put the ball in the right areas. No movement in the air. And that is why he's got to be impeccable with his line and length. Got to be landing the ball in the right areas. Ask questions of the batsman. Bowler business like line and length. Man on strike. Quite a seasoned campaigner. Vikram. Getting his bat in front of pad, no gap, smothering the swing movement if there was any. The only thing that we've missed out in the first 7 to 8 matches in this tournament is the movement in the air. What a shot, stand and deliver. With a still head, just look at the transfer of weight. That is where he could generate the power. The moment he picked up the gap, it was going to be a cryptomania boundary all the time. Exactly the kind of start that Panjwani wanted. Good looking stroke. Darshan should not be too worried about that kind of a boundary being given away. The fact that Vikram Panjwani is willing to take the chances, is willing to play the strokes, Darshan should not mind it. He could bargain a few runs looking for a wicket or two. On the back of length delivery straight away after being driven on the front foot. The follow-up delivery back of length, forcing Vikram to go onto the back foot. That is the stock delivery for Gala. Oh, that is a bit of a misfield. Cryptomania boundary, the second one in the over. Vikram Panjwani cutting loose. 2 boundaries in that single over to Vikram will set up the stage for him. To watch his son bowl, that's Vipul Gala.
12 for none. That too will be the third Cryptomania boundary in this second over. Romanov, he slashes hard. No half measures, goes after it more than 100% to fetch himself a Cryptomania boundary, although a little streaky one, but welcome boundary. 16 for none, off to a flying start, exactly what team challengers wanted. Team Blasters have to be a little careful here. They are defending a decent total, but not a mountain are they defending. 160 to win, reasonably tidy score, but they'll have to bowl well and field well to defend this score against a marauding challengers. Vikram should be fine with that no call from Hardik as it came in quite early. दो स्पेक्ट्रा ग्रुप बराज मशीनरी ओवर्स के बाद 16 रन्स बने हैं बिना कोई नुकसान के. हमारे टाइटल स्पॉन्सर आनंद राठी ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस. हमारे को स्पॉन्सर्स क्रिप्टोमेनिया, चेतक प्लाई, महाराजा की पसंद, के तरसानिया कंस्ट्रक्शन, सेजिल रियल्टी. हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स मी एंड स्पेक्स, Hashtag Nuts, Relief Partner, Zandu Pain Relief. Big thank you to all the sponsors on behalf of the Cricket Committee Chairman and the Governing Council member, Mr. Kaushik Mehta. It's going to be Smith who will continue. Looking to cut loose, yes, that has been put away out of sight. Fetching the ball from into the middle and off stump and putting the ball into that arc between mid on and mid wicket for a smashing Cryptomania boundary. A time to pull up their socks, Team Blasters. Time to get their act together. What a golden opportunity for Hardik Panchal to be opening the batting for Team Challengers, and stage is all set for him to play his own game. Not so well timed. Oh, what a good attempt there. It goes in vain. That's Varun Sabu. Half chance. Good effort. No timing on that one. No timing at all. One of our key men, Prasad Karkera, continues to monitor the proceedings with Chalish Shadwa. The fingers are stinging for Sabu.
What a free flow of the bat. Hand-eye coordination. That's quite a rhythmic Cryptomania boundary. Runs coming in thick and fast. They've not to put the ball in the right areas. The new ball bowlers haven't been able to test the character and temperament of the opening duo of Team Challengers at the moment. Team Challengers, as far as the run chase is concerned, they have really set themselves pretty nicely. At the moment, they're almost on cruise mode, 25 for none. A man in hot chase, the ball will win the race. Enough Wills on it. Cryptomania boundary. Room on offer because Vikram is slashing hard. Even if it is off the edge, the ball will fly away. No half measures there. पहली विकेट की खोज में लगी हुई है टीम ब्लास्टर्स. बहुत ही बढ़िया शुरुआत है टीम चैलेंजर्स के लिए. वो लेफ्ट हल्की सी नीचे रही, काफी बाहर भी थी वो गेंद. 3 स्पेक्ट्रा ग्रुप बराज मशीनरी ओवर्स के पश्चात 29 रन बिना कोई नुकसान के 102 गेंदों में 131 रन बनाने हैं. स्मिथ के पहले 2 ओवर्स में 17 रन्स बटोर ली है टीम चैलेंजर्स ने. एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी नींव रखते हुए विक्रम और हार्दिक अच्छी शुरुआत को एक शानदार साझेदारी में परिवर्तित करना, ये इस वक्त हार्दिक और का ये दायित्व है. Varun Sabu now into the attack. The very experienced Varun. Getting some shape on that one. Some late movement, just a little movement. Good work. The bottom hand coming into play. The bare minimum backlift. Bare minimum.
Such a good looking shot. Well fielded by Smith. 3.4 overs, 32 for none. That's 0 in the wickets column. That is quite encouraging for team challengers. 160 बनाने हैं, उनमें से 32 रन्स काफी अच्छे समय में बटोर लिए बिना कोई विकेट खोए. काफी सूझबूझ के साथ ये दोनों ही बल्लेबाज इस इनिंग्स को मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स को खेलते हुए इन रनों को अपने खाते में जोड़ा है टीम चैलेंजर्स ने. विक्रम पंजवानी हम जानते हैं कि कितने सक्षम बल्लेबाज है. अपनी टीम की पॉजिटिविटी वैक्सीन है टीम चैलेंजर्स के लिए विक्रम पंजवानी. बारी किनारा लेकर और एक क्रिप्टोमेनिया चौका. तीसरी मर्तबा वो आउटर एज को लेकर विक्रम पंजवानी ने चौके लगाए. तीसरा क्रिप्टोमेनिया चौका बारी किनारे को लेकर. तीनों ही चौके उसी जोन में आए हैं. उस बड़े होल को प्लग करना होगा, वहीं पर वो रनों की पाइपलाइन को काटना होगा. फिलहाल 36 रन बन चुके बिना कोई नुकसान के. खबरदारी का इख्तियार करना होगा. टीम ब्लास्टर्स ने थोड़ी सी रेमेडी ढूंढनी होगी. खराब गेंद से अंजाम तक पहुंचाया. ये तो बिल्कुल एक सौगात दी वरुण साबू ने. मैदान के बाहर इस इनिंग्स का ये पहला चेतक प्लाई छक्का. बिल्कुल क्रूज मोड पर यह टीम नजर आती हुई टीम चैलेंजर्स. 4 ओवर्स के पश्चात 42 रन बन चुके हैं. इससे शानदार शुरुआत क्या होती. गेंदबाजी में अब आजमाइश होती हुई शौर्य की. शौर्य श्री गोपाल जाजू. स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हार्दिक पंचाल. 4 ओवर्स के पश्चात 42 बिना कोई नुकसान के.
Two noises there. At the end of the day, he has a smile on his face. That's a good delivery. Looking to turn the face of the bat. That could be dangerous, to turn the face of your bat to a seaming delivery. That could be dangerous. Sri Gopal Jaju fell like that, dismissed like that. And nicely played, very nicely played. कितनी नजाकत से खेला, एफर्ट कितनी कम, गेंद को अपने शरीर के पास आने दिया, बिल्कुल सर के नीचे, आखिरी वक्त पर बल्ला मोड़ दिया. क्रिप्टोमेनिया चौका, नजाकत भरा चौका. बहुत ही शानदार शुरुआत प्राप्त हुई है टीम चैलेंजर्स को, बिल्कुल क्रूज मोड पे नजर आते हुए, बिना कोई रिस्क लिए अच्छे रन रेट के साथ इस इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए, सजाते हुए, बिना कोई अनटूवर्ड रिस्क लिए हुए. और इसी वजह से क्रिकेट इस वक्त जो पेश हो रहा है, काफी अच्छा क्रिकेट टीम चैलेंजर्स की तरफ से. मन बना के आए हार्दिक के, मौका मिला है अपनी टीम के लिए एक अच्छा योगदान कर दिखाऊंगा आज. लंबे समय तक विकेट पे रुकने की फिराक में नजर आते हुए हार्दिक. पांच ओवर्स के बाद 47 रन बिना कोई नुकसान के. 5 स्पेक्ट्रा ओवर्स, बराज मशीनरी ओवर्स, स्कोर 47 रन बिना कोई के तरसानिया कंस्ट्रक्शन विकेट. स्वागत है आप सभी का आनंद राठी जीएससी T20 लीग 2025 में. स्मिथ शाह 2 में 17, विपुल गाला 1 में 12, वरुण साबू 1 में 13, शौर्य जाजू 1 में 5. अभी तक का कुल मिला के 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है टीम ब्लास्टर्स ने. पहले विकेट की खोज में लगी हुई है टीम ब्लास्टर्स. मोनिश शाह की आजमाइश होती हुई, ज्यादातर मोनिश को हम नई गेंद के साथ अपने कर्तव्य दर्शाते हुए देखते हैं. सेमी न्यू गेंद मिली है. कैन ही प्रूव टू बी द मैन विद द गोल्डन आर्म. एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास, सक्षम गेंदबाज है. इस थोड़ी सी टाइट सिचुएशन में किस तरह से अपनी टीम की नैया पार लगाते ही ये देखना होगा. बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है. इज गॉट अ स्मार्ट हेड ओवर हिज शोल्डर्स. जो भी टीम में मनीष होते हैं उस टीम की थिंक टैंक का हिस्सा होते हैं.
धीमी रफ्तार है लेकिन बिल्कुल सही जगह पर उस गेंद का टप्पा। थोड़ा सा बापेंगे हार्दिक मोनिश को। ओ मौका बना था, मौका बना था वहां पर। बल्ला हाथ में घूमा था, गेंद विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी, उसके बावजूद वो मौका बना था, मौका गवाया। सर कहीं और, बल्ला किधर और गेंद तीसरी जगह पे गई। 49 बिना कोई नुकसान के। 50 रन मुकम्मल हो चुके टीम चैलेंजर्स के लिए उस बेहतरीन क्रिप्टोमेनिया चौके के साथ। वो गेंद स्लॉट में हाफ वॉली गेंद सही अंजाम तक पहुंचाया हार्दिक ने उस गेंद को। 53 रन बने हैं और बहुत ही आला शुरुआत। पार्टनरशिप भी उतने ही रनों की है। वाइड का इशारा, वाइडिश यॉर्कर करने का प्रयास किया। काफी अरसे के बाद गेंदबाजी करने का मौका मिला है इस सीजन शुरू होती हुई। थोड़ा सा बैलेंस ठीक रखना होगा। The head is falling over. It needs to be well balanced. The transfer of weight. It's been a tidy start for him. If he can go on for some more time. जबरदस्त शॉट, लंबा छक्का। अगर हार्दिक के रेंज में वो गेंद आएगी तो बड़ा शॉट बिल्कुल खेलेंगे। जिस तरह से सेट हो चुके, जिस तरह से वो गेंद फुटबॉल जैसी नजर आ रही है, वो शॉट बनता था। एग्जीक्यूशन बहुत ही शानदार। चेतक प्लाई छक्का महाराजा की पसंद। 60 रन बन चुके। बिल्कुल अब 14 ओवर्स में इस मैच को जीतने के लिए 100 रन बनाने। 14 में 100, 10 विकेट्स हाथ में है। स्पेक्ट्रा ग्रुप, बराज मशीनरी, पावर प्ले यहीं पर समाप्त होता है। ब्लास्टर्स ने 30 रन बनाए थे अपने पावर प्ले के पश्चात और बिना कोई विकेट खोए 60 रन मुकम्मल किए टीम चैलेंजर्स ने। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक आगे निकल चुकी है टीम चैलेंजर्स। बहुत ही ज्यादा आगे इस वक्त नजर आती हुई टीम चैलेंजर्स। बहुत ही जल्द कुछ करिश्मा कर गुजरना होगा टीम ब्लास्टर्स के खेमे ने, बॉलिंग ब्रिगेड ने। देखना है कि अब कौन सा वो अगला नुमाइंदा है जो बॉलिंग की जिम्मेवारी स्वीकार करता है। जाजू का स्पेल बरकरार रहेगा।
चैलेंजर्स की जो इमारत है वो ब्लू है, ग्राफ पर देखिए, और वही 6 ओवर्स में टीम ब्लास्टर्स की जो येलो इमारत है वो कितनी छोटी है, ये फर्क यहीं पर आप का बयां होता है। आजमाइश होती हुई अंकित पोद्दार की, एक्स फैक्टर गेंदबाज। They need somebody to break this partnership. They need the man with the golden arm to make his presence felt. Ankit Agarwal. इस बीच हमारे गवर्निंग काउंसिल मेंबर और आउटडोर स्पोर्ट्स के चेयरमैन कौशिक भाई मेहता का आगमन हुआ है। स्वागत है कौशिक भाई का। वेलकम टू मिस्टर कौशिक मेहता। रिक्वायर्ड रन रेट 7.16, सभी विकेट्स महफूज। जिग्नेश भाई हिरानी का भी स्वागत है। वेलकम टू मिस्टर जिग्नेश भाई हिरानी। अंकित अग्रवाल, a fighter player. He loves to be in the thick of things. He wants to be in action at all times. Super timing on that one. Super timing. A minimum effort and such a premium result. Cryptomania boundary. The timing and placement absolutely spot on from the blade of Vikram Panjwani. 66 बिना कोई नुकसान के Panjwani is on to 36 of only 14 balls. Just look at that awesome strike rate. He needs to continue. After being said now, he would be wanting to carry his bat. Just keep putting the bowling on its merit. Oh, what a good delivery. What a good delivery. Did it go the other way to beat the bat of somebody else? That has Vikram, that really takes some effort. 6.4 overs, 66. He had to make a dash for it. Hardik Panchal was running for his dear life. At the moment, one bowler from Team Blasters has to put his hand up and upset the apple cart of Team Challengers. They're off to a dream start. Solid foundation has been laid. देखिए आज की शाम टीम चैलेंजर्स जैसी बड़ी टीम में भी ओपनिंग करने का मौका मिला है हार्दिक को, और दोनों हाथों से उस मौके को स्वीकार किया है।
एक अच्छी योजना के साथ उतरे विक्रम पंजवानी और हार्दिक, और एक अच्छा योगदान दे दिया है हार्दिक ने अभी तक। यहां तक जो भी बल्लेबाजी की है, काफी अच्छा योगदान। स्वागत है हमारे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर परेश मुचाला जी का स्वागत है। वेलकम टू परमिंदर भामरा जी। કેમ છો ભાઈ? આજે સવારના નહોતા સાહેબ પાસે? યસ યસ. 68 for none. Once again, the warmers to welcome to the Anandrathi Gsc T20 League. A little circumspect, a little tentative there. Yes, but it's great to see that Newman has been given the opportunity and he's grabbed it with both hands. That's the way to go about things. That's down the leg side, should be an extra run, and also he's got to re-bowl that delivery. $69 for none it is. We are into over number 8. Suryansh. Suryansh is one hell of a positive player. No turn in this wicket. Unless you are a quality wrist spinner, it's going to be tough for a finger spinner to get some turn on this wicket. Oh, brilliantly done. Brilliantly done. Very well fielded. Yes, the team blasters have to be grit and determination. They got to just carry on. Be a professional outfit. Just put your mind to the job. Try to make life difficult for team challengers. At the moment, they are on cruise mode. Everything falling in place for team challengers. Somebody's got to upset this rhythm. Nicely played. Now with the kind of batsmanship being scripted by Hardik, Vikram Panjwani is playing his own game. Nothing to worry at the moment. It's looking too easy for team challenges at the moment. Although the match is far from over, still some cricket left. You've got two season campaigners in the camp team blasters, Varun Sabu and Jaju. In spite of the missed timing, it goes into the boundary rope. Hardik fetches himself for one more boundary, Cryptomania boundary. 76 it is. We are into the 8th over. 2 balls left. Current run rate is 9.91. The required run rate less than 7. Oh, that's a good pickup by Sharad inside the circle. Sharad will always sport this favorite red trucker cap.
Because the ball is not turning, he will have to alter his line, especially to the left-handed batsman. That's a smashing shot. One bounce into the Cryptomania boundary fence. Runs coming in thick and fast. The score at the end of 8 overs. That is an awesome 81 runs on the board. अब आलम यह है कि 72 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 79 रन्स बनाने हैं. आसान सा लक्ष्य. सूर्यांश रनिंग रन है, अपने पहले ओवर में 13 रन से दिए हैं. कोशिश करते रहनी होगी टीम ब्लास्टर्स ने. कोशिश करते रहना ये हमारा उत्तरदायित्व है. एक प्रोफेशनल टीम के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पूरी तरह से आखिरी वक्त तक लड़ते रहे. नहीं, कोई चांस ही नहीं था. कोई भी चांस ना था. कोई चांस नहीं. 1 रन की बढ़त. 82 रन्स बन चुके हैं. 71 गेंदों में 78 बनाने हैं. 71 बॉल्स एंड 78 टू विन द मैच. इस शॉट के पहले दोनों ही बल्लेबाज 39 पे थे. दोनों ही उस 1 रन के साथ 40 रन्स बना लिए हार्दिक ने, और विक्रम पंजवानी जो स्ट्राइक पर है उन्होंने 39 रन्स बनाए मात्र 18 गेंदों में. बस यही आगे बरकरार रखना होगा. इसी खेल को जारी रखना होगा. इस खेल को थोड़ा सा पेश प्रयास अच्छा किया था शरद ने. हाफ चांस भी शायद नहीं कह सकते क्योंकि शरद 45 प्लस प्लेयर है. कोशिश बढ़िया की थी. 2 रनों की बढ़त, 2 रनों का इजाफा, 85 रन्स बने हैं. Oh, a little pace, closing the face of the bat a little too early. That's the first misstep by Vikram in this innings. And he will be a little bothered with it because he's playing so well. He just needs to make sure that he takes his team past the winning post. Ideally, he would be wanting to carry his bat. What a contribution this man is making. That is more interesting. One would have expected Vikram to play the same way, the way in which he's playing at the moment, but what a refreshing approach from Hardik. कुछ अच्छी गेंदबाजी भी की है लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी है. अब अच्छे क्रिकेट के साथ दुआओं की भी जरूरत है टीम ब्लास्टर्स को. अब क्या कहे, मौका दिया था विक्रम पंजवानी ने
आशा छोड़ दी थी, कैच छूटा वहां पर। गेंद जब वो नीचे आई, उनका उनका हाथ काफी लंबा था शरीर से. दैट शुड कम इनटू योर चेस्ट. End of 9 overs 89 it is. He survives. Vikram Panjwani survives. आपने देखा कि परसों दक्ष को एक दो मौके मिले, क्या खामियाजा भुगतना पड़ा सामने वाली टीम को. यू गॉट टू टेक योर चांसेस को सफलता में कन्वर्ट करना ये जरूरी है, विशेष रूप में जब आपकी टीम थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति में है. और वो विक्रम का विकेट था. He can make you pay big time. Shaurya to bowl from the far end. Hardik on strike. The strike rate for Vikram Panjwani more than 200 and 200. मिस्टर झा का भी स्वागत है. मिस्टर सीनियर झा, वन ऑफ द को-ओनर्स, सिटिंग alongside सुनील देवली एंड सुशील पाटिल. What a terrific knocker by Sharad Kelkar earlier in the evening. What a role this man played in the partnership, Smith Shah. In fact, he was the one who looked more positive early on. At the moment, they are looking down the barrel of the gun. That's Team Blasters. It's in a bit of a worrisome situation at the moment. In a spot of bother. The target 160, 65 balls, 70 required. 65 में 70. Good carry to the wicketkeeper. Good carry. It's quite a tall and lanky man. The ideal kind of a body frame for a seam bowler. Still learning the tricks of the trade. Coming up the ranks as a fine young seam bowler. Targeting the block hole. Looking to put the ball into the roots of the batsman. They need a couple of magic moments here. It's looking damn easy for Team Challengers. A 92 for none, 9.4 overs, 2 balls before the drinks interval. Spectra Group, Barrage Machinery, over number 10.
ड्रिंक्स इंटरवल के पहले की ये आखिरी गेंद, आखिरी गेंद ड्रिंक्स इंटरवल के पहले। Premeditated shot. 60 balls and 67 runs to win the match as we go into that final drinks interval of the evening. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? To face him, Panjwani. Panjwani on to 46 of 24 balls. Hardik on to 43 of 36. Welcome to the post-drinks interval, the final 10 overs of match number 8.
50 रन बन चुके विक्रम पंजवानी के लिए। इस अर्धशतक की जरूरत थी। विक्रम पंजवानी बैक इनटू हिज एलिमेंट्स और टीम के लिए भी 100 रन बने हैं, यानी कि बिल्कुल अच्छा साथ निभाया है हार्दिक ने भी। 97 झाले, 100 कोण बोलले? $58 balls, 57 balls, 62 required, 10.3, 98 for none. बहुत कुछ हुआ वहां पर, लेकिन रन एक भी नहीं मिला। स्वागत है विपुल कल्याणी का, हेमंत मोहिते का। अपने आप के लिए थोड़ी सी जगह बनाई थी, लेकिन ठीक तरीके से अपने आर्म्स को फ्री नहीं कर पाए हार्दिक। 1 रन की बढ़त होती हुई 11वें स्पेक्ट्रा ग्रुप बराज मशीनरी ओवर में 1 गेंद बाकी है। 99। Score after 11, 99. पैंतालीस मिनटों में अपने 9 ओवर्स को अंजाम देना होगा टीम ब्लास्टर्स ने। अब शरद की आजमाइश होगी बॉलिंग ब्रिगेड की अगली कड़ी के रूप में। इन ऑर्बिट 10 की तरफ से गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हार्दिक को। हमारे पेन रिलीफ पार्टनर देखिए स्क्रीन पर, जंडू फास्ट रिलीफ। चले, उंगली उठी है वो बड़ी नीक थी। 50 रन से बनने से रहे, आखिर में बहुत अरसे के बाद वो पहली विकेट गिरी है। पहला के तरसानिया कंस्ट्रक्शन विकेट गिरता हुआ टीम चैलेंजर्स के लिए। अच्छा योगदान किया, काफी समाधान भरा ये नॉक था। कुणाल बाउसर अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं
और एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आउट हुआ है, शायद उसी वजह से कुणाल भावसर का आगमन होता हुआ शरद की पहली गेंद पर वो सफलता हाथ लगी है कि आज जिस तरह से जादुई बल्लेबाजी की थी, क्या उसी तरह से गेंदबाजी करते हुए भी अपना करिश्मा कर गुजरेंगे? देखते हैं। जिगर और कुणाल साथ में हो और बातचीत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छी दोस्ती है दोनों के बीच, लेकिन मैदान पर जब उतरते हैं तलवारें खींच लेते हैं। Hundred up on the board. 100 for one. अच्छी फील्डिंग अंकित की। दिलचस्प शुरुआत शरद के लिए। पहली बार हवा का झोंका यहां पर लहराता हुआ, बिट ऑफ अ रिलीफ। Some breeze has started to get going. 102 for 1. We are into the 12th over. Nicely played. That will go crashing into the Cryptomania fence. Getting right on the top of that one. Vikram Panjwani steering the ball into that backward point area for such a smart Cryptomania boundary. 106 for 1. कैसे हो मैडम? All well. Welcome to Mrs. Sanjana Yogesh Kotak. हल्का सा पुश किया। बारह स्पेक्ट्रा ग्रुप बराज मशीनरी ओवर्स के बाद 107, एक विकेट के नुकसान पर।
48 balls, 53 runs to win the match with 9 wickets in hand, with such a good batting lineup that can really go deep. It's a game of cricket, game of glorious uncertainties. You never know. You got to just dig deep. Team Blasters will have to take hold on to that fuel in the reserve tank. The flick shot. स्वागत है योगेश कोटक का. Whenever Raju Pawar sir, after a strong appeal, when he puts his head down, no matter how you keep appealing, he will not show any interest. What a good shot! What a good shot! Miles in the air for a humongous Chetak Ply 6 coming off the blade of Kunal Bowser, almost overreaching. In spite of that, the ball went a long distance. Just look at the power in that shot. You're almost overreached. When a batsman overreaches the delivery, difficult to put the ball out of the ground, but that's a brutal power. 114. Required run rate has come down to 6.13. Good running, 2 runs added. Two balls left in over number 13, 116. Required run rate exactly 6 and over. One bounce. Cryptomania boundary. Less than one a ball is what they require now with the 9 wickets in hand. That tells you the story of the match. That is a clear indicator of which way the match is heading. Unless Team Blasters do something out of the blue, unless they produce some magic, it looks difficult for Blasters. Is the writing on the wall? Not yet. Not yet. Well bowled. Dangerous shot to be playing. That should have been played on the front foot. Instead, he smashes it to backward a point on the back foot. After 13 Spectra Group, Barrage Machinery overs, the scoreline is 120 for 1. 42 balls and a 42 win. On cruise mode. Right from ball number 1 till this point in time, things have looked so easy for
team challenges. And so much of credit goes to Vikram Panjwani for anchoring one end. And while anchoring the innings, he made sure that for most part of the innings, the strike rate for Vikram Panjwani was more than 200. Sharad will continue to have a go. Man facing him, the well set Vikram. Kunal on to 14 of 7. Looks as if Vikram has made up his mind to carry the bat. He would like to come back to the pavilion unconquered. If he manages to do so, he will be in such a positive frame of mind in the next match. Make hay while the sun shines. So when you're in good form, collect as many as you can. Sometimes when you are in bad form, the runs dry up in a big way. Even getting off the mark becomes a difficult ask. This season, Sharad has cut down his run up. Is to have a run up of 10 to 12 yards, and now just 3 to 4 yards this season. No chances at all. That was a cryptomania boundary all the way. Effortless. Everything has fallen in place for Vikram Panjwani, the batter. Straight hitting. This is exactly what Sharad Kelkar exhibited. This kind of shots when he was batting, and is being treated in the same coin. 2 on the trot, क्रिप्टोमेनिया बाउंड्रीज. केवल 30 रन बनाने हैं 38 गेंदों में. 66 नाबाद पर पहुंचे हैं विक्रम पंजवानी केवल 35 गेंदों का सामना करते हुए. अपनी टीम की नैया पार लगाते हुए लिटरली गति में परिवर्तन किया. उस गेंद को सहलाया. एक्स्ट्रा कवर के रीजन में 1 रन मुकम्मल हुआ. शरद की इस ओवर की अभी आखिरी गेंद. स्ट्राइक पर बाउसर. चौदह स्पेक्ट्रा ग्रुप बराज मशीनरी ओवर्स समाप्त हो चुके हैं. 131 पे 1 के तरसानिया कंस्ट्रक्शन विकेट गिरा है. 36 गेंदों में मैच को जीतने के लिए केवल 29 रन बनाने हैं. बिल्कुल आसान सा लक्ष्य.
आज की शाम टीम चैलेंजर्स ने एक ऐसा रवैया इख्तियार किया है जिसके चलते कोई मौके ही नहीं दिए टीम ब्लास्टर्स को कि किसी भी तरह से मैच में वापसी रचे. बहुत ही सटीक क्रिकेट खेला, करेक्ट क्रिकेट खेला. They are in the driver's seat in a very commanding position at this point. That's team challengers. They have a stranglehold on the match, big time. Getting some good bite of the surface. Shaurya was a little excited with that bounce and carry. The wicketkeeper not appealing at all. That was the biggest giveaway. No problems there for Raju Pawar sir. मिस टाइम शॉट लेकिन स्वागत है, 4 रन्स मिलेंगे. अब बिल्कुल आपातकालीन स्थिति बन चुकी है टीम ब्लास्टर्स के लिए. बिल्कुल नामुमकिन सा अब इस लक्ष्य को डिफेंड करना. द राइटिंग ऑन द वॉल इन बोल्ड लेटर्स. 136 for 1 with that unintentional cryptomania boundary, but a welcome one. 24 runs to win in 33 balls with 9 wickets in hand. It tells you the story of the match. Very well placed. The only bone of contention in this innings is now whether Vikram Panjwani can carry his bat. Kunal will continue to play like this. That's the only way he plays. This is the only way he plays. That goes into the pool. Literally into the swimming pool she goes. That's a biggie. Chetak plays 6. That's a big one. When Kunal Bowser strikes the cricket ball, it travels almost into orbit. It goes a long way. $142.
End of 15 Spectra Group Barrage Machinery overs 142 for 1. 30 गेंदों में 18 रनों की दरकार. लास्ट में इधर कैच हुआ ना, वो तो इधर ही कैच हुआ ना लास्ट विकेट. हाँ, इधर ही सिंपल सा ही कैच हुआ, पूरा में कैच हुआ. वरुण साबू. Short and wide, asking for trouble. Cryptomania boundary. Moves into the 70s with that Cryptomania boundary. 73 of 39 balls. What a batting paradise this wicket is. 3 centuries, so many half centuries. The batters having a ball. Once you get your eye in, once you are set, that 80 plus 90 plus innings century always on the cards, unless you make a silly mistake or unless a ripper of a delivery. Well fielded. Saransh. Into the stands. Chetak plays 6. Desperate times for Team Blasters with that kind of a workaholic batting approach. Team Blasters have been handed over a reality check. 150 up on the board. Only 8 required. Only 4 required. Only 4 required. Only 4. Cryptomania boundary. Four required. 2 balls left. 1 ball.
3 more to win. Two required. It was so well hit. Oh, hello and good night. Hello and good night, says Kunal with that big six. What a terrific approach, attitude from Team Challengers. They played like a champion team tonight, and that's the seal on the deal. A very convincing victory. Requesting one and all to please get to the presentation area. The two gentlemen from the organizing committee, that's Prasad Karkera and Paresh Muchala, requesting both the teams to please come into the presentation area. Team Challengers and Team Blasters. Match number 8 comes to an end. चले जो बल्ला शोर हुआ और मच गया हल्ला होगी चौको छक्कों की बारिश ना चले गेंदबाजों की साजिश देख के तेज और स्पिन का जादू बल्लेबाज हो जाए बेकाबू क्रिकेट के खेल का यही है जज्बा हर कोई चाहे गेम पे कब्जा ले विकेट फूले बॉलर का सीना एक एक रन पे निकले
पसीना बड़े रोमांच हर गेंद में पल पल क्रिकेट में रम गया गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब जीएससी टी20 का जादू है सर पे चढ़ा जीएससी टी20 का जादू ये फीवर बड़ा जीएससी टी20 का जादू है सर पे चढ़ा जीएससी टी20 का जादू ये फीवर बड़ा है सर पे चढ़ा ये फीवर बड़ा जीएससी टी20 का जादू है सर पे चढ़ा जीएससी टी20 का जादू ये फीवर बड़ा जीएससी टी20 का जादू है सर पे चढ़ा जीएससी टी20 का जादू ये फीवर बड़ा Here we go. यू घुमा के चले जो बल्ला शोर हुआ और मच गया हल्ला होगी चौको छक्कों की बारिश ना चले गेंदबाजों की साजिश देख के तेज और स्पिन का जादू बल्लेबाज हो जाए बेकाबू क्रिकेट के खेल का यही है जज्बा हर कोई चाहे गेम पे कब्जा ले विकेट फूले बॉलर का सीना एक एक रन पे निकले पसीना बड़े रोमांच हर गेंद में पल पल क्रिकेट में रम गया गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब जीएससी टी20 का जादू है सर पे चढ़ा जीएससी टी20 का जादू ये फीवर बड़ा जीएससी टी20 का जादू है सर पे चढ़ा जीएससी टी20 का जादू ये फीवर बड़ा Yes, good evening and the warmest of warm welcome to the presentation ceremony as match number 8 comes to an end in the Anandrathi Gsc T20 League Season 5. Congratulations to team challengers for that terrific victory. 162 win and they win it in style. Hard luck, Shigopal Jaju. Team Blasters is such a good bunch of cricketers but could not go past the winning post in spite of quite a few positives that they collected during the match. It's time for me to invite Shigopal Jaju on stage. Hard luck, Jaju. Second defeat on the trot. The job is obviously cut out as you move into the next match. 160 against a team like Challengers on this kind of a wicket was always going to be a tough ask unless your bowling brigade produced some magic. Didn't happen. End up on the losing side. So last time we actually didn't batted well, but Jigra played really well, and the kind of fielding and bowling attack we did, and we came back with it. I was very confident we're going to defend 160 easily. But again, I think our bowlers were not on the line at all. 3-4 catches drop, and that too of Vicky Panjwani is not helping our purpose anyways. But they played really well. Hardik and Vicky just batted fantastic. We'll try and come up strong in the next game. Wishing a team Blasters the very best as they look to make a comeback. It's time for me to invite the winning team captain, a happy Rahul Jal, to come up on stage. Such a convincing victory, a business-like victory will set the stage for your team. 2 wins on the trot.
played like a champion team, and things are looking very bright. Things are looking sunnier for you. Thank you so much, sir. Yes, as I've always told the team that, T20 is a game that, you have to be spot on from ball 1 till the 240th ball. So we had our share of, dominance in the first 10 overs, and they fought back in the next 10. But I told the team in the mid-innings break as well that if you would have asked me that you would have been chasing 160 after bowling first, I think not just me, almost every team would have taken that. And kudos to the final over spells of Kunal and Praveen bhai. They bowled excellently. But I told the team that, we don't want to just cross over the line. We want to go there and perform a clinical chase wherein we set our standards as this is how we want to be playing. We want to play a fearless, aggressive brand of cricket. And we also had a lot of family members of a lot of players. Vicky's family is here, my family is here, my friends are here, and also the kids, Kabir, Meher and Anaisha and all are here. So we wanted to perform for them. The Ivan, I think the next best wicket keeper that we are going to have. So there were so many people here blessing us, and I think this is for them and this is for everyone who has been supporting Team Challengers. We had a tough season last year, but this is for them. Siddharth Bhaiya, thank you so much for coming, and thank you so much everyone. And Vicky, champion stuff, buddy, champion stuff. Thank you. Congratulations. And yes, it's time for us to hand over the award for the best catch of the match. A gift hamper on behalf of our gifting partner, that is #nuts. Rahul Jha, best catch. Inviting the man of the match award winner to come up on stage. Two contenders. Obviously, it was always going to be Praveen in contention with that 4 wickets haul. But the man of the match award goes to Vikram Panjwani for his 80 plus knock. The man of the match award and also gift voucher worth rupees 1,000 on behalf of me and Specs. Back on stage to be collecting the MOM award that really sets up the stage for Team Challengers. Vikram Panjwani in this kind of form is good news for Team Challengers and not so good news for the rest of the teams. The way Hardik batted alongside you, that was really a blessing in disguise. No, the way Hardik started with me, I'm really impressed with the way he was there with me. He was hitting the bad balls and he was defending the good ones. I really loved the temperament there, and that really gave me the confidence to go for my shots, and this innings really means a lot to me because last year wasn't that great for me. So, I was getting those 20s, 30s, but this knock really means a lot to me. And our mentor this year, Rohan, he's been telling me, you are in the nervous 30s, how people bat in the nervous 90s. So you got to make it big, you got to make it count, and I'm happy I did it for my team today. And having said that, having gotten this man of the match, I would like to call Praveen Jain on stage, because the first innings, he's left. So Praveen Jain, really, the way he bowled in the first innings, he really brought us back, because the way these guys fought back Smith and Sharath, the way they were playing, it looked like 180, 190 was on the cards. So the way Praveen bowled and got us back was really great. Really happy with the way the team is shaping up, and we hope to carry on the same momentum throughout the tournament. Thank you. Well done. Well played. And if Prasad Karke and Paresh Muchala give me the signal, we end up the proceedings right here. Match number 8 comes to an end. Tomorrow,
8:30 is going to be the toss time, but inviting one and all at 7 p.m. for the unveiling of the trophies. Thank you. Good night. God bless. Take care. मिलते हैं कल ठीक 7 बजे.